हेलो एवरीवन, वेलकम टू Unacademy एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑन इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक वही है जो हम कई बार कर चुके हैं, एंड दैट इज रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्रू एमसीक्यूज। हमने ग्रामर काफी सारी पढ़ ली है, लेकिन देयर इज ओनली सो मच ग्रामर दैट यू कैन स्टडी थ्रू थियोरी, एंड वो ज्यादा याद भी नहीं रहती है। टू रियली टेल यू द ट्रूथ, अगर तुम रूल्स आफ्टर रूल्स यू जस्ट वांट टू क्रैम, इट डज नॉट स्टिक टू द मेमोरी समहाउ, and even more so you don't know how to use it when the situation comes. So it's best to look at grammar through very little like easy MCQs जो कि मैं आज तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ग्रामर के बारे में हमने काफी बात करी है, एंड हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को थियोरेटिकली देखने की कोशिश करी है, लेकिन थियोरी इतनी ज्यादा याद नहीं रहती है। इट डज नॉट, तुम्हें याद नहीं रहता है, उतना रिकॉल अच्छा नहीं होता है, एंड सबसे ज्यादा बड़ी चीज ये होती है कि तुम्हें याद नहीं रहता है कि एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर यूज करना है, नॉट वेरी क्लियर। सो थ्योरी छोड़ के थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस वी बीन डूइंग फॉर द लास्ट लाइक 5 और 6 सेशंस, एंड इनफैक्ट दिस इज द 6th सेशन। 5 सेशन हम ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड देने की जरूरत है। Only what we need to do here is to kind of start practicing, and I've got your questions in front of me. Let me bring them to you. Just give me a second. Let's start off as these questions are going to be very simple. तुम्हें जनरल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रामर पढ़ने का मेन रीजन तुम्हारे लिए ये होना चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट एज मेनी मोर इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एज पॉसिबल। इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर के अंदर एक पूरा प्लेथरा है। इट्स देयर इज एन एंटायर like there's like hundreds of different kinds of structures, and हर structure का एक particular purpose होता है, and उसका एक format होता है, और उस format से उसको agree करा के उसका क्या meaning निकलना चाहिए, that kind of gives you a very important cue in your reading comprehension pursuits. So क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर इट्स नॉट लाइक आंसर एज मच, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दैन बीइंग रियली एबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस और उसका पर्पस क्या है। सो काइंड ऑफ लेट्स बिगिन। मैं जो इंपॉर्टेंट इनपुट्स होंगे वो वैसे भी तुमको बीच बीच में देता जाऊंगा। सो हियर वी आर, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, एंड लाइक आई सेड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आई होप द क्वेश्चंस आर विजिबल टू यू। अगर कोई भी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, ऑल्दो मेरा दिखाई देना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल सिंस इट्स अ क्राइटेरिया, अगर मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मेरी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। Let's start solving the question. So what is the question answer to the question number? Don't bother about the question numbers because there's like a lot of questions that I have, and मैं उनमें से वो वाले क्वेश्चन पिक करके आता हूँ, लेके आता हूँ जो जनरली इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी कि दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो कि तुमको एक 5 मिनट तक एक क्वेश्चन एम्प्लॉय रखे। लाइक क्वेश्चन इज लाइक अ 15 सेकंड क्वेश्चन, और तुम्हें बहुत जल्दी उसका आंसर आ जाएगा अगर तुम कुछ बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान दे लो तो। सो व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 दैट वी आर बिगिनिंग विद? अरे क्या है? Okay, so can you give me the answer to the first question? Hi Kaisar, very good evening. Alina, Shilpi, कैसे हैं आप? A little blur. Okay, एक बार अपना पेज रिफ्रेश करने की कोशिश करो. I just checked and I think I'm sending out packets at a healthy rate. एक बार तुम अपना पेज रिफ्रेश करने की कोशिश करो, otherwise I'll do it. Okay, so always turn your television off. What is the answer? The answer is D. The reason क्या है, Alina? अनन्या, यार आदि आंसर बिल्कुल सही है तुम लोगों का। रीजनिंग भी शेयर करोगे क्या? थोड़ा सा मेरा काम कम हो जाएगा। So always turn off your television. Okay, always turn your television off when you went to bed. Went to bed क्यों नहीं हो सकता? Because this is a general instructions. Simple present tense में बताया बोला जा रहा है ये, तो बाकी का सेंटेंस भी पैरेललिज्म फॉलो करते हुए सेम टेंस में होना चाहिए. So always turn off your television when you went to bed does not agree with it. As soon as you got bored, again got is again past tense. Turn off is
yes, as Alina says, could have been if there was go instead of went. अगर go की जगह went होता तो इसको यूज कर सकते थे, but then that is why उसने options के अंदर difference create करने की कोशिश करी. See, after you have fallen asleep, how can one, now this like beats the logic. जो नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स चीजों का होता है उसमें मोस्टली जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट दिमाग में आता है वो कि मोस्ट पीपल आर लाइक व्हेन दे फॉलो स्लीप दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फॉर समबडी टू लाइक टर्न ऑफ द टेलीविजन व्हेन दे फॉलोन asleep. So even while the tense agrees, this is not the option that we're going for. We're basically going for what? We're only going for before you leave home. So always turn your television off before you leave home. So तुम्हें एक precedence मिल गया. इसी मोरलेस इसी तरह के सेंटेंसेस हैं तुम्हारे सामने. लेट्स सी, मे बी कोई एक एटिपिकल सा केस भी सामने आ जाए जिससे हमको कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा. शी वॉज नॉट लिसनिंग वाइल, व्हाट इज द आंसर? She was not listening while I was talking. We are complaining same problem. Was not listening. अब सबसे पहली चीज that you should be looking for is the same tense. बाकी उसके साथ कुछ और ऐसी चीज होगी जो लॉजिकली अग्री नहीं करेगी तो बाद में देखेंगे. बट देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस दैट आर नॉट इन द past tense. So she was not listening while I was talking. ये आंसर जैसा लग रहा है लेकिन सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. We are complaining. R is the problem, so B cannot be the answer. She is very angry with you. Again, सेंटेंस का और ज्यादा मीनिंग में समझने की अभी कोशिश भी नहीं कर रहा. आई एम सिंपली लाइक आई एम ट्राइंग टू मैच द टेंस हियर. शी वाज नॉट लिसनिंग वाइल, जब वो सुन रही होगी, जब वो नहीं सुन रही थी उसी टाइम पे कुछ हो रहा होगा तो वो भी पास्ट में होगा. यू टेल हिम समथिंग टू डू, अगेन द टेंस डज नॉट अग्री. यस, इट्स लाइक बियॉन्ड डाउट. नाउ द आंसर इज ए. ओके, अब थोड़ा सा पेस पकड़ते हैं. मैं हर बार क्वेश्चन एक्सप्लेन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा. आई डोंट थिंक आई नीड टू, तुम्हें पता है अच्छे से. ही वेंट आउट एज the sun is shining, she came in, I am leaving home, he is worried about something. What is the answer? नहीं यार, मैं देख लेता हूँ कमेंट, लेकिन it's not like if see one of the students gets it, it's still my duty to explain the question because the others might not be getting it, right? So तुम्हारा comment मिल गया था क्या सर मुझे, but I still had to like give my reactions. Okay, so he went out as she came in. Yes, again, came, went out, came is like in the same tense. Sun is shining is the problem. I am leaving home. He is worried. All सारी की सारी प्रॉब्लम टेंसेस के अग्रीमेंट के साथ है. यस, यू आर राइट. द आंसर इज ए. 166. प्लीज आंसर भी लिख दो, सॉरी क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो. 166 ए लिखोगे तो मुझे ज्यादा आसानी होगी. ओके, द लाइट्स वेंट आउट when the 8 o'clock news started after I have finished my homework. I have नहीं हो सकता. I have का मतलब मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ. Again, the lights went out. 166 का बोल रहे हो क्या सर? The lights went out after I have finished my homework cannot be the answer. The lights went out as soon as you arrive home. You arrive home. Went out already हो चुका है ना. When something is in the past, that has already happened. As soon as you arrive home is something that is about to happen in the future. So these cannot match. B cannot be the answer. C cannot be the answer. The lights went out before the prime minister enters. Again, tense की problem है. Yes, you guys were correct. The answer is A. 167. They studied hard, although they were tired. They were good friends. They were happy. They had a lot to eat. 166 का भी A है. Yes, Arushi, you're absolutely right. What about 167? They studied hard, although Alina, रुक जाओ एक मिनट. रुको. Let me kind of refresh the page. Let me just make sure this is from not my side, okay? Just let me make sure. So, okay, I'm sending out packets at less than 3.9% loss. So, I'm not losing any frames. आई थिंक अगर तुम अपना पेज रिफ्रेश करोगे या फिर ऐसी जगह पे, इफ यू आर यूजिंग अ सेल फोन, ट्राई टू कम एट अ प्लेस जहां पे तुम्हारे सिग्नल से बेटर मिल रहा है. आई होप इट काइंड ऑफ बिकम्स बेटर इन अ मोमेंट. ऑलराइट आरुषि, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक. सो दे स्टडीड हार्ड ऑल्दो दे वर टायर्ड. देखो, स्टडी करने से क्या रोक सकता है उनको?
देवर गुड फ्रेंड्स होना लॉजिक को बीट करता है, नेचुरल चीजों का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड उसके अगेंस्ट जा रहा है, कॉमन सेंस के अगेंस्ट जा रहा है. दे स्टडीड हार्ड ऑल्दो दे वर हैप्पी. अगेन व्हाई कैन कांट दे स्टडी इफ दे आर हैप्पी? सो अगेन बीट्स द लॉजिक. जस्ट दे स्टडीड हार्ड ऑल्दो दे हैड अ लॉट टू ईट. उनको बहुत सारा खाने को था फिर भी नहीं पढ़ सकते थे, वो डज नॉट अगेन बीट्स द लॉजिक. द आंसर इज अगेन ए. राइट. When I got home, my sister opens the door for me. Got home. Past tense है. I will have a good rest. This is present tense. This is future tense. My mother was setting the table. When I got home, my mother was setting the table, like for dinner perhaps. So मैं जब घर पहुंचा तो माँ खाना टेबल पे लगा रही थी. So that is kind of fixed. And what about D? My father hasn't come home back home. ये अभी सिर्फ present के लिए हो सकता है. So again does not fit. What is the answer? Yes. Arushi, you're bang on. R 168 का answer is C. Yes, Ananya, you're absolutely correct. कैसे अगर तुम्हारा yes आंसर के साथ था तो तुम भी सही हो. I swim every day when the weather was very hot. Was नहीं आ सकता. I will be in Marmaris. I'm on holiday. I swim every day when I'm on holiday. The sea will get hot. This is future. This is future. And this is past. This is like a habit. तो habit हमेशा simple present tense में होती है. So every day, swim every day, and I am on holiday. They kind of agree. The answer is C. नहीं, फिर से देखो. I swim every day. Swam नहीं बोला उसने. C is the answer. कैसे? Did you understand it? Okay, let's see another set of questions now. What the hell is wrong with me? I'm so sorry for this dance around. Okay, question number 91. That she was chosen Miss Turkey. What is the answer? ये नया एक स्ट्रक्चर है, probably तुमने नहीं सुना हो. It's a good thing तुमने सुना हो, तुमने पढ़ा हो, but then if अगर नहीं तो उसको समझने की कोशिश करो. It's a very typical structure. That she was chosen Miss Turkey. ऐसा लग रहा है ना बीच में से अधूरा सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम. That she was chosen Miss Turkey. That के पहले जनरली कुछ कुछ होता है. I heard that. She said that. So that she was chosen Miss Turkey. बात उल्टी कर दिया एक्चुअली. जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, I learned that he is filthy rich. Sorry, he was filthy rich. I learned that he was filthy rich. So that he was filthy rich is what, yeah, was what I learned. तो मैंने सब्जेक्ट किसको बना दिया? ये पूरे के पूरे चीज को सब्जेक्ट बना दिया सेंटेंस को. That he was filthy rich. So what was that I learned? I learned that he was filthy rich. या फिर that he was filthy rich is what, या was what I learned. I hope it is clear. So the answer क्या होगा इसका 91 क्वेश्चन का? 91 का आंसर होगा डी. ओके. नो, दैट शी वॉज चोजन मिस टर्की. देखो सेंटेंस का पैरेललिज्म हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा तुम्हें. बी वेरी केयरफुल अबाउट द टेंसेस. सो व्हाट, दैट शी वॉज चोजन मिस टर्की उल्टा स्टार्ट करते हैं डी से. एवरीवन प्रेजेंट वोटेड इन हर फेवर. ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गए. दैट शी वॉज चोजन मिस टर्की, अब मुझे वर्ब लाना पड़ेगा. सो दैट शी वॉज चोजन मिस टर्की, एवरीवन प्रेजेंट वोटेड इन हर फेवर. आई डोंट नो इसका रीजन क्या है फिर. Okay, that she was chosen Miss Turkey, everybody approved it. Again, दो अलग अलग सेंटेंस हो रहे हैं ये. That she was chosen Miss Turkey, nobody glad. इसमें सब में सब्जेक्ट नहीं आ सकता, बिकॉज इसको सब्जेक्ट बनना है पूरे को. तो वी नीड समथिंग जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो.
सो दैट शी वाज चोजन मिस्टर की मेड मी हैप्पी, वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए बात। 91 का आंसर इज ए। देखो, इफ आई से, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। दैट ही स्टडीज ड्यूरिंग द डे, इसको हिंदी में स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करूं तो ये कुछ ऐसा ट्रांसलेट होता है। ये बात, द फैक्ट दैट ही, यहां पे इमेजिन कर लो, द फैक्ट दैट ही स्टडीज ड्यूरिंग द डे एंड वर्क्स ड्यूरिंग द नाइट। अब मुझे क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। इम्प्रेस्ड मी, व्हाट इम्प्रेस्ड यू? दैट ही स्टडीज ड्यूरिंग द डे एंड वर्क्स ड्यूरिंग द नाइट। स्ट्रक्चर समझ में आया? सो दैट शी वाज चोजन मिस्टर की मेड मी हैप्पी। इन सबके साथ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे एक दूसरा सब्जेक्ट है, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन। वी ऑलरेडी हैव अ सब्जेक्ट हियर, वी डोंट नीड अनदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डुप्लीकेशन हो जाएगा। वी नीड समथिंग दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट बट ओनली एन ऑब्जेक्ट। 92D maybe, okay, whether they do it or not, do it or not is in the present tense, don't make any difference नहीं होना चाहिए था, doesn't make any difference होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। वो करेगा या नहीं करेगा इज लाइक वन सिंगल प्रॉब्लम। डोंट नहीं आ सकता, यहाँ पे डजेंट आएगा, इसलिए वील रिजेक्ट इट। व्हाट अबाउट बी? वेदर दे डू इट और नॉट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। दे डू के साथ डिपेंड्स अग्री कर रहा है। यस अनन्या, यू वर करेक्ट। अलीना कैसे? डोंट मेक एनी डिफरेंस कैसे होगा? ए वेदर दे डू इट और नॉट इज समथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, या फिर वेदर दे डू इट और नॉट डोंट मेक एनी डिफरेंस, नहीं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? फिर ओके, वेदर दे डू इट और नॉट क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम, क्रिएटेड इज इन द पास्ट, यहां पे तो मुझे प्रेजेंट चाहिए। वेदर दे डू इट और नॉट विल कॉज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, वेदर दे डू इट और नॉट विल कॉज, देखो, वेदर और विल, ये डी किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ दैट डी शुड फिट हियर? होना चाहिए था। दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वेदर और विल, वेदर इज इनडेफिनिट। तुम वेदर कहां लगाते हो? जहां पे तुमको पता नहीं होता क्या होने वाला है, लेकिन उसके साथ विल नहीं लगा सकते तुम। वेदर ही विल कम और नॉट, अब यहां पे तो तुमने विल यूज कर लिया, लेकिन आगे यू कैन नॉट यूज विल डिपेंड ऑन दिस बिकॉज यू आर नॉट सेइंग वेदर ही रियली गोना कम और नॉट। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा। सो द आंसर हियर इज बी, वेदर दे डू इट और नॉट, और लॉजिकली भी फिट हो रहा है। वो आएंगे या नहीं आएंगे, वो करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात पे डिपेंड करता है, यानी कि बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वी हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन। 93 का आंसर, आई एम सेटिस्फाइड। Yes, answer is A. Do I need to explain it? I am satisfied that she came third in the competition. Okay. The fact that they blamed us for the accident. Again, अब यहाँ पे वही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। अगर फैक्ट काट दूंगा तो वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना आंसर पे। That they blamed us for the accident was surprising. मैंने बोला था ना यहाँ पे द फैक्ट लगा के रख लेना, अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने यहाँ पे यही किया है। अगर तुम पूरा इसको कंसिडर करना चाहते हो तो पूरा कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि ये एग्जैक्टली यही वाला स्ट्रक्चर होता है। whenever the sentence starts with a that, it is this same structure. It's almost as if कि तुमने the fact को ब्रैकेट में रख रखा है। So the fact that they blamed us for the accident, they blamed us which was not our fault, that they blamed us for the accident which was not our fault, ये sentence अभी complete ही नहीं हुआ, ये दोनों के दोनों subordinate clauses हैं। That they blamed us for the accident was surprising, ये मैंने सेंटेंस परफेक्टली एंड कर दिया, एंड आई थिंक दिस इज द आंसर, बट लेट्स कीप लुकिंग। सी और डी भी देख लेते हैं एक बार। At which person was killed, that they blamed us for the accident at which person was killed, again does not make any sense, is not the answer. The fact that they blamed us for the accident, I wasn't involved, दो अलग अलग sentences, इनका कोई connection नहीं है, so we were right, the answer is B. What about 95? The world is round, the world is round is a fact.
ओके, एवरीवन इज कंफर्म 95 का आंसर भी होना चाहिए। मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ इसके अंदर क्या होगी। लेट मी राइट दैट सेंटेंस इन दैट फॉर्म। द वर्ल्ड इज राउंड इज अ फैक्ट। द वर्ल्ड इज राउंड इज अ फैक्ट। कंफ्यूजन है मुझे कि इज अ फैक्ट तुम द वर्ल्ड इज राउंड के लिए बोल रहे हो पूरा का पूरा, या फिर इज अ फैक्ट तुम द वर्ल्ड के लिए बोल रहे हो। तो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ तुमने एक सब्जेक्ट के लिए दो एक्शंस निकाल बना रखे हैं। लेट मी गिव यू सिमिलर सेंटेंस एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। Yes, sir, इसके immediately बाद I have a class on as a special class. I have a like test on grammar. I cooked the food, made everyone surprised. I cooked the food, so I made everyone surprised. इसमें कॉमा इमेजिन किया जा सकता है ना। I cooked the food, made everyone surprised and stole the show. It's almost like incomplete sentence है। अगर मुझे इसको सेंटेंस को if I want to make sense with this sentence, I will have to put a that here. That I cooked the food, made everyone surprised. So cooked is for the I. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझते हो ना। कुक्ड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आई, लेकिन मेड एवरीवन सरप्राइज का सब्जेक्ट क्या है दैट। Did you understand this? So the answer 95 question का answer is not B but A. That the poor have a hard life is a fact. Okay, 96th question. I did not cut it properly. रुक जाओ, मैं next वाले इसमें ले आऊंगा इसे। I am sorry for this. 96 question को ignore मार दो, उसके सारे सारे options clear नहीं है। Next page. वन 149 क्वेश्चन का आंसर। अंकित, मैंने देखा नहीं यार 96 क्वेश्चन यार, रुक जाओ एक मिनट, देखते हैं अपन चल के। Did the fact that his father was a press? Answer is A. Ankit, the answer to 96 question is A. No, he probably kind of eliminated and found the answer. उसने उसके हिसाब से ABC नहीं लग रहा होगा, तो इसलिए उसने सोचा D है आंसर, बट देन आंसर इज A. Did the fact that his father was a professor help him in his career? ये बात कि उसके पिताजी प्रोफेसर थे, उसने उसके करियर में कहीं हेल्प करी क्या? The answer to 96 question is A. 149 का आंसर क्या बोल रहे हो कैसर? He did his medical training at a hospital. Yes, 149 का आंसर है C. किसी को डाउट है तो प्लीज पूछते जाना। He did his medical training at a hospital. Who is very famous नहीं आ सकता, हॉस्पिटल के लिए you cannot use who. He did his medical training at a hospital of which is located just of which what is located just beside a river. Not the answer.
whose patients are treated very carefully. Again, हॉस्पिटल के साथ तुम whose नहीं यूज कर सकते. whose and who are personal pronouns, लोगों के लिए यूज किया जाता है. ये हॉस्पिटल के लिए तुम यूज नहीं किया जा सकते. ऑफ विच बोल सकते थे. ऑफ विच पेशेंट्स आर ट्रीटेड वेरी केयरफुली. सो अगेन नॉट द आंसर. लेकिन सी में भी मुझे प्रॉब्लम है. सी इज नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ द आंसर. yes, it's a very good answer as far as this question goes. The answer is C. मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ reiterate करके, ताकि तुम लोगों को बाद में confusion नहीं हो. लेकिन I still have a problem because this is like most of American take. British English में which इस जगह पे use नहीं होता. Can somebody complete the sentence for me? C option answer है, लेकिन it's not the best version of the sentence. Can somebody tell me where I am going with this? क्या कोई मुझे बता सकता है मैं कहाँ जा रहा हूँ इससे? All right, I'll help you out. He did his medical training at a hospital that specializes in heart surgery. यहाँ पे दैट की जगह विच की जगह दैट आना चाहिए, बिकॉज ये डिफाइन कर रहा है उस हॉस्पिटल को. ही डिड हिज मेडिकल ट्रेनिंग एट अ हॉस्पिटल. उस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करी उसने जिसमें, जब ऐसा सेंटेंस बोला जाता है तो इसको एसेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और ये विच से नहीं आ सकता. विच इज ओनली एन एडेड कॉमेंट. यस अंकित, दैट आना चाहिए इंस्टेड ऑफ विच. दिस इज एसेंशियल इंफॉर्मेशन. दैट इवनिंग वी वेंट टू द ओपेरा. आंसर. किसी को ये दैट और विच नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बता देना. It's a concept which is a little difficult to grasp. Most लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको grasp करने में, बट एक बार कोई समझा दे तो आ जाता है समझ में. Alina, this is answer to like 150th question. Okay, that evening we went to the opera where we met the newly appointed general director. Maybe let's like kind of sounds like the answer. That was opened last week by the Minister of Culture, which were fully booked when all the lights went out. पता है आंसर क्यों? yes, you're yes 150, and it's very honest of you to say that you're not like 100% sure. प्रॉब्लम क्या है? कॉमा है. अगर कॉमा नहीं होता ना बीच में तो बी आंसर भी हो सकता था, लेकिन दैट क्लॉज को कभी भी कॉमा से डिफरेंशिएट नहीं करते. दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन. इसका एक एग्जाम्पल सुन लो. आई सॉ द पैरट. मैंने कॉमा लगा दिया अब यहां पे. दैट टॉक्स. तो मैं ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूं आई सॉ द पैरट, मैंने वो पैरट देखा, एंड देन आई हैव अ लाइक कॉमा हियर, सो इट काइंड ऑफ डिसरप्ट्स द फ्लो ऑफ द सेंटेंस, एंड इट काइंड ऑफ सीम्स लाइक दिस इज अ न्यू सेंटेंस ऑल टुगेदर. दैट टॉक्स, वो टॉक करता है. वो पैरट को सब भूल चुके हो. यहाँ पे whenever you put a that, you don't put a comma here because it breaks, like disrupts the flow of the sentence. I saw the parrot that talks. The parrot that talks is one single entity. Parrot that talks is one single entity. इनको तोड़ा नहीं जा सकता बीच में से. It's a very description of the parrot. I saw what? The parrot that talks. In fact, if I were to be extremely correct, I will have to include the also within this demarcation. इस demarcation के अंदर मुझे यहाँ पे the भी include करना पड़ेगा. You saw what? I saw the parrot that talks. ये पूरा का पूरा one entity है, इसको तोड़ नहीं सकते तुम. So the answer to the question is that evening we went to the opera. अब यहाँ पे कॉमा लगना सही है. Where we met a newly appointed general director. So the answer is A, and B नहीं हो सकता क्योंकि that के पहले कॉमा नहीं लग सकता. सिर्फ इस रीजन की वजह से हमने that को रिजेक्ट कर दिया, and hence the answer is A. Is it clear? Okay. 151st question. Okay, 151 का you think D is the answer. His father, कॉमा लगाए ना. Okay, so फिर that तो रिजेक्ट हो गया. वैसे भी लोगों के साथ जब तक उनको इंसानों जैसा ट्रीट कर रहे हैं तब तक उनको इंसानों की तरह ट्रीट कर रहे हो तब तक दैट नहीं लगा सकते तुम. हाँ, इंसान को इंसान की जगह किसी और एंटिटी की तरह यूज कर रहे हो, जैसे कि कैंडिडेट बोल दिया तुमने. द कैंडिडेट दैट वी मेट टुडे.
द कैंडिडेट दैट वी मेट टुडे, ऐसा बोल सकते हो तुम. द ड्राइवर दैट वाज ड्राइविंग इन द बस. ऑल्दो मोस्ट पीपल विल से इसमें हु लगना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब इंसान को किसी उसके जॉब या उसके रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं तो वहां पे दैट लगा सकते हैं इंसान के साथ. सो यहाँ पे दैट नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे कॉमा भी लग गया, और फादर के साथ वैसे भी दैट नहीं यूज कर सकते. ही गेव अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज. His father, he gave a series of interviews. बीच में से एक क्या फ्रैगमेंट हो गया, as if like ये अपने आप में एक अलग सेंटेंस है, बाकी सब अलग है. It kind of disrupts the flow of the sentence. His father is an electrical engineer. Said he didn't like to work. दो verb forms एक subject के साथ नहीं हो सकते. His father, who was already over 65, इसको लगा के अगर सेंटेंस इसको हटा भी दोगे तो सेंटेंस स्टिल मेक सेंस. His father said he didn't like to work. इस पार्ट को कंप्लीटली अगर हटा भी दोगे तो सेंटेंस स्टिल वर्क्स. दैट इज अ क्लियर कंडीशन फॉर अ हु और अ विच कंडीशन. Abhinav, I'm really sorry, buddy. These are like very small details that I like honestly don't remember. And let's kind of keep the discussion to the topic, right? Mr. Benson, आंसर समझ में आ गया ना? 151 का इज आंसर डी. Mr. Benson, 150, do you say B is the answer? Mr. Benson, that was known to be very rich. नहीं, यहाँ पे दैट नहीं लग सकता. कॉमर्स से दैट सेपरेट नहीं हो सकता. Mr. Benson, whose firm closed because of complaints, shot himself. Yes, that sounds like the answer, but let's keep looking. Mr. Benson, we haven't ever met him. Again, बीच में से एक छोटा सा fragment create कर दिया. Does not make sense. Mr. Benson, he owns several factories. फिर से subject नहीं repeat हो सकता. The subject is Mr. Benson. You cannot have another like confusing second subject. So, Mr. Benson owns several factories, ऐसा हो सकता था. Who owns several factories, shot himself, but that is not the case, not the answer. The answer to 152 question is B. Crops can now be grown in deserts. आंसर बताओ. 153rd का आंसर. Yes, absolutely correct. You got this. तुम्हें आ गया कॉन्सेप्ट समझ में. Crops can now be grown in deserts where farming would be impossible without irrigation. नया सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. Relative pronoun यूज हो सकता है, which kind of refers back to the original subject. ये हमने pronoun में किया था, if you remember. Crops can now be grown in deserts. Most of them are in Africa. ये तो sentence complete हो गया. अब ये blank की कोई जरूरत ही नहीं लगी. Crops can now be grown in deserts. It was impossible to cultivate the land. ये दो अलग अलग sentence हो गए. Crops can now be grown in deserts. These are known as dry areas. Again, बिना कुछ full stop लगाओ, कुछ semicolon लगाओ तो नया sentence start कर सकते हैं. Absolutely correct. 154th also you think C is the answer. The boys which need more care. Which boys के साथ नहीं. The boys that need हो सकता था एक बार like extremely formal written language में, लेकिन यहाँ पे it's not that strict. So the boys, they, again नया subject नहीं हो सकता. The boys who have been offered a scholarship are having special lessons. Yes, you were correct. The answer is C. The boys, their fathers, again नया subject define कर दिया. Hence cannot be the answer. A, B and D cannot be answers. Okay, the last set of questions perhaps for today. So that का structure है अभी. Please be quiet so that अलीना इजी क्वेश्चन ही करने. इट्स नॉट लाइक कि मुझे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तुम्हें क्लैट दे रहे हो, क्लैट पेपर है तुम्हारा, तो इट्स नॉट कि क्वेश्चन आएगा तुमको, बट देन इन क्वेश्चन से तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएंगे.
So that is the very basis of it. It's not the question that is difficult or I can't get difficult questions. It's just that I wanted to complete very easy questions so that with minimum effort you can like revise everything that you've done so far. या अभी तक तुम जो जानते हो उसको एक बार रिवाइज किया जा सके. Please be quiet so that 22 का आंसर is B. I can hear. Please be quiet. Can hear. टेंस भी वर्ब अग्री करता है एंड सो दैट का स्ट्रक्चर इज परफेक्टली फिट. सो एज ऑन सो दैट में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है मुझे सेंटेंस बना के? सो एज कब यूज करते हैं एंड सो दैट कब यूज करते हैं? जल्दी से दो सेंटेंसेस. ठीक है अलीना, दैट सेंटेंस वर्क. सो एज का यूज करते हो? सो और एज में डिफरेंस होता है, जैसे सो और दैट में डिफरेंस होता है ना, देयर इज गोइंग टू बी समथिंग इन बिटवीन. ओके, तो तुमने सो दैट का बना दिया, मैं सो एज का बना देता हूं. He is so rich as to make even princes feel poor. मतलब जो राजकुमार लोग होते हैं उनको भी he can make feel like poor बना सकते. तो कंपैरिजन कर रहे हो तुम. कितना रिच? इतना रिच कि किसी को भी शर्मिंदा कर दे. एंड दैट में क्या होता है? इवेंचुअली क्या होने वाला है? तुमने सेंटेंस बनाया था आई वॉन्ट टू गो बैक होम. क्यों? सो दैट इवेंचुअली क्या होगा? सो दैट आई कैन स्टडी और आई कैन स्टडी फॉर द टेस्ट. समझ में आ गया डिफरेंस? सो एज इज फॉर मेकिंग अ कंपेरिजन. इट इज लाइक द एज सून एज स्ट्रक्चर, एज क्विक एज बिग एज का स्ट्रक्चर होता है ना, उस जैसा होता है सो एज. आई होप इट इज क्लियर. अच्छा हो गया ना? यू स्टिल डिड वेल. अच्छा किया तुमने. इज सो एज यूज्ड इन कंपैरिजन सेंटेंसेस? यस. जब एज के, अब इनके बीच में भी सो एज और एज के बीच में भी डिफरेंशिएट कर देता हूं अंकित, सिंस यू आर आस्किंग. ओके, सो ही इज एज रिच एज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. सो ही और क्वीन ऑफ इंग्लैंड दोनों सेम कैटेगरी के लोग हैं ना दोनों, इसलिए मैंने यहां पे एज का स्ट्रक्चर यूज किया. यहां पे सो एज नहीं यूज कर सकता था मैं. ओके, ही प्लेज so well as to be selected immediately. अंकित डिफरेंस समझ पा रहे हो? यहां पे इंसान को इंसान से कंपेयर किया जा रहा है, यहां पे इंसान को एक क्राइटेरिया से कंपेयर किया जा रहा है. समझ आया? ओके, 22nd का आंसर वाज, यू वर करेक्ट. द आंसर इज बी. 21 का आंसर क्या है? सी बोल रहे हो. माइक डिसाइडेड टू बिकम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट so he can study, decided to become an anthropologist so he can study the life of a primitive tribe. That kind of sounds like the answer. नहीं, that's why से दोबारा नया सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकते. Mike decided to become an anthropologist, that's why he will, again you cannot start another sentence before ending this one. Mike decided to become an anthropologist after he saw a documentary film on a primitive tribe.
अगेन सो में भी यही प्रॉब्लम थी, सो भी नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है. ओके, व्हाट वाज आई लुकिंग एट? यस, सी काइंड ऑफ साउंड्स लाइक द आंसर. Mike decided to become an anthropologist due to the fact that the film is on a primitive tribe. That is awkward structuring. Yes, the answer is C. Due to और because of में क्या difference होता है बच्चों? Can you tell me? चलो आज probably हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा. Maybe this is like a discussion for the next time. 222 का आंसर क्या है? Having seen that film before, she wants to see a different one. Means आंसर 222 का आंसर बताओ. Definitely A is not the answer. उसने यही वाली फिल्म देखी है ना, तो डिफरेंट फिल्म बोल रहा है यहाँ पे. बिकॉज शी सीन दैट फिल्म बिफोर शी वांट्स टू गो टू अ डिफरेंट वन. नहीं, ए नहीं हो सकता बिल्कुल. 222 का नहीं हो सकता ए. उसका मतलब देखो, एज शी हैज सीन अ डिफरेंट फिल्म बिफोर शी कैन सी दिस फिल्म. ये मतलब है क्या उसका? उल्टा होना चाहिए इसका. बिकॉज शी सीन दैट फिल्म बिफोर शी वांट्स टू गो टू अ डिफरेंट वन. बिकॉज इज टू मच ऑफ अ रीजन. बहुत स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट रीजन की वजह से बिकॉज लगाते हो तुम. यहाँ पे द बेस्ट आंसर इज एज. अ वीक रीजन होता है जब किसी, ऑटोमेटिकली तो नहीं करने लगता ना कोई, फिर भी देख सकती है वो. सो इट मीन्स एज शी सीन द फिल्म बिफोर, उसने ऑलरेडी फिल्म देखी हुई थी. हैविंग सीन बोल रहा है ना, सो ऑलरेडी देख चुकी है वो. सो एज शी सीन दैट फिल्म बिफोर शी वांटेड टू सी अ डिफरेंट वन. I hope the answer is clear. Yes. Having worked all day, I was tired last night means as I had worked all day, I was feeling tired last night. I worked tiring hard all day yesterday. Since I have worked all day, I am tired now. Because I was tired last night, I worked all day. The answer is A. किसी को कोई डाउट है? I got to the airport at 9:15. My plane left 10 minutes later. Means 224 का आंसर बता रहे हो ना अलीना तुम? I got to the airport at 9:15. My plane had left 10 minutes later. Sorry, my plane left 10 minutes later. Answer is C. I got to the airport just before my plane left. बस प्लेन जाने ही वाला था एंड मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया. ऑलराइट गाइस, दिस वाज फन. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता देना. आई हैव अ कपल ऑफ मैसेजेस फॉर यू. तुमने क्लास क्या बोलते हैं, you've taken classes on YouTube, you've taken classes as a special class. In fact, I have a special class right now. I should be there already. I'm like running a couple of minutes as usual. ओके, तो प्लस के बाद आइकॉनिक याद रखना. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तुम्हें इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है. खरीद तुम जो भी चाहो, तुम्हारी मर्जी है. इट इज कंप्लीटली, दो चीजों का ध्यान रखना. अगर जितना खरीदना है एक लंप सम में ले लेना, एक एक महीने करके मत खरीदना. अननेसेसरीली ज्यादा पैसे खर्च कर दोगे. एंड ट्रांजैक्शन जब करो तब मेरा कोड याद रखना. किसी भी कोड को तभी याद रखना, अदरवाइज वो एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सिस्टम नहीं एक्सेप्ट करेगा. ऑलराइट, प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं. मैं तुम्हें ये कई बार बता चुका हूं. प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे 1 अप्रैल से एज मच एज 20%. अगेन मेरा कोड याद रख लेना. सो 10-20% प्राइस बढ़ जाए एंड देन तुम 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इट्स लाइक तुम एनीवेज यू लाइक गोइंग टू बी लाइक एंड you'll end up spending 10% more than you can like spend now. एक्सटेंशन ऑफर अभी भी चल रहा है, लेकिन सिर्फ 1 अप्रैल तक. 3 मंथ्स पे 1 मंथ फ्री है, 9 मंथ्स पे 3 मंथ्स फ्री है. There's something called as the Unacademy Lite subscription. 1 मंथ का कॉस्ट इज 999, 3 मंथ्स का इज 1999.
इसमें अप टू 25 टेस्ट फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एग्जाम्स तुम्हें मिलेंगे. इसके लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो, उसकी डिटेल्स निकाल लेना. Unacademy लाइट मॉक टेस्ट का कैलेंडर देख लो. There's a lot of tests here. I think there are like 25 of them. 4 into 7 is 28. Yes, these are 25 tests. सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्यों अटेंड करना चाहिए? देखो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि द सेम पीपल हु गोइंग टू बी गिविंग क्लैट आर गोइंग टू बी गिविंग दीज एग्जामिनेशंस. तो तुमको एक रफ मॉक रैंक पता चल जाएगी तुम्हारी कि कितना एफर्ट मारने की जरूरत है. और couple of events that I need to tell you about is there's a session on globalization of legal education and legal profession in India. Thank you, Ananya. Bye, Alina. Thank you so much for turning up, guys. Thank you, Ankit. Okay. So April 2nd को ये सेशन है. प्रोफेसर आनंद मिश्रा इसको होस्ट करेंगे. प्लीज बी हियर. इट्स an important event and it's going to add up a little to your overall like subject knowledge. A couple of batches. So ultimate batch for MCET is like an English and Hindi batch. 3-month ka batch starts March. Already started today. You have two course batches today starting. All right. Course score booster is for 22-23, and this is like an all NLU alumni batch. Again starts today. It's an all English language batch. Let's crack CLAT. Like CLAT 23 aspirants. April 1st से स्टार्ट हो रहा है. इंग्लिश एंड हिंदी का कॉम्बिनेशन है. इंग्लिश इसमें प्राइमरी लैंग्वेज है, ध्यान रखना. ऑलराइट गाइस, कंटेंट में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट, इनसेंसिटिव, इनएक्यूरेट नजर आया हो तो उसे रिपोर्ट कर देना. बग्स बाउंटी अलाउज यू अ स्मॉल प्राइज एवरी टाइम यू फ्लैग समथिंग करेक्टली, एंड हमारे लिए हमारा कंटेंट रिफाइन हो जाता है. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. इट वाज लवली टू हैव यू हियर. मुझे लगता है सेशन अगर अच्छा लगा हो तुम्हें तो प्लीज एक बार लाइक मार जाओ, इसको शेयर कर लेना. चैनल तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा. आई विल सी यू अराउंड 8 o'clock. I have a special class right now. ग्रामर की अपनी ये सारे के पुराने सारे कॉन्सेप्ट जो इनको टेस्ट करना चाहते हो कि where do you stand, let's meet there in a couple of minutes. I'll see you around, guys.